Good morning, students. So welcome to all of you in our next video. So all of we are going to discuss about today more about the internet. In the last class we are discussing about the internet features, internet understanding, internet components, what are the uses of internet, in which places we are using the internet. Okay, so in all discussion, when we discuss about the requirements of component, at that time I am discussing about a concept of मॉडेम. ओके, क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे डिवाइसेस रिक्वायरमेंट है इंटरनेट को यूज करने के लिए, तब मैं एक और डिवाइस के बारे में भी तुम्हें बताया था, दैट इज मॉडेम. ओके, मॉडेम. तो तब मैंने डिस्कशन किया था, तभी मैंने बोला था कि वी रिक्वायर ए मॉडेम, बट मॉडेम इज नॉट ओनली ए डिवाइस लाइक योर कीबोर्ड और माउस. It requires some internal knowledge, so it is require a special class for discussing the modem. मैंने पहले से ही बोला था. So today we are discussing about the modem, application of modem and different types of modem. Okay, different types of modem. So first of all again recall कर दिया जाए कि हमें क्या क्या requirement चाहिए. सर, we require a system. That is your client system. Another is your server system. So when we transmit the data, that is called request, and when we again transmit the data, that is called server. Okay. So request and response, that is server machine. Request and respond. Request is coming, going, respond is coming. Okay. So, but when we send the request student, that is sent in the form of signal. That is sent in the form of signal. Because we are the human being. We transmit the data as our language, but when the data is transmit in the air, client to server, through the web, when the data is transmit, that data is called signal. So signal is passed from the client machine to server machine, and signal is transmit from the server machine to client machine. Okay, so in all cases we require a signal. Okay, so students, you are saying that sir, तो इसमें सर क्या है? तो signal मतलब electronic signal. Yes, electronic signal is there because in the air, in the wave, what is transmit, that is called electronic signal. But students, in our computer language, that electronic signal is called as analog signal. The electronic signal is called our analog signal. Okay, in the form of computer language, the electronic signal is known as analog signal. तो अब तुम बोलोगे सर हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते, that's it. तो जब फर्स्ट ईयर में मैंने तुम्हें कंप्यूटर फंडामेंटल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था, उसमें बोला था कि अकॉर्डिंग टू डाटा computers are two types. मतलब according to signal, computers are of two types. One is your analog signal, another is your digital signal. मतलब there are two types of signal, analog signal and digital signal.
Sir, why sir there are two types of signal? Because the computer understand the electronic signal. You all of you know that because computer is a currently electronic device, so it transmit the data, it transmit the wave in the form of electronic signal, which is known as your analog signal, which is known as your analog signal. But this analog signal, electronic signal, is not understood by the user. We are the user, we are the human being. We are not understanding this electronic signal or analog signal. उसका एग्जाम्पल भी स्टूडेंट्स, जब तुम वेदर फोरकास्ट देखते हो, वेदर फोरकास्ट में जब ऐसे वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट दिखाता है तो द सिग्नल इज लाइक दैट. जब तुम आईसीयू में मेडिकल में देखते हो, मेडिकल में जो हार्ट बीट पल्स रेट होता है वो सिग्नल इज लाइक दैट. बट दीज सिग्नल्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग बाय द यूजर आर नॉट अंडरस्टैंडिंग these signals. Okay, these analog signals. So another type of computers are developed, another types of computers are invented which are using the digital signal, so we are using the computers which uses the binary digit, because we are the human being understand the digit binary, octal, decimal, hexadecimal, different types of number systems are there. So we are the human being, we are the a user or developer only understand the digital data, digital signal. So there are two types of signal is invented. One is analog signal and another is digital signal. Analog signal for through the wave, moisture, volume, temperature means general data, real data. But for the user data, we are required the digital signal. So here a terms come that when the computer, when the client machine send the signal, when the client machine send the signal, that is in the form of digital, because we are the human being, we are the client, we send the data, we send the data is in the form of digital. But when it transmit in the air, it does not the digital data, because digital data cannot be transmitted, electronic signal. So digital data is converted into the analog signal. Digital data is converted into analog signal and travel, okay, travel and reach at the server machine. Okay, reach at the server machine. तो server machine में जो डाटा पहुंचा, जो सिग्नल पहुंचा, that is analog. तो डिजिटल सिग्नल से मैंने भेजा, लेकिन वहां पहुंचा एनालॉग सिग्नल. ओके, तो वहां से जो आया दैट इज एनालॉग सिग्नल, बिकॉज सर्वर मशीन अगेन ट्रांसमिटेड द एनालॉग सिग्नल, बट दैट एनालॉग सिग्नल इज अगेन converted into digital signal, because the computer, the machine understand the digit. We are the human being, we are understanding the digit, we are using the digital data machine. Okay, so here when the another, here also when another machine is there, that machine also uses the digital. So generate हुआ digital, लेकिन transmit हुआ analog, लेकिन पहुंचा फिर से digital. अगेन जब डिजिटल निकला वहां से, लेकिन ट्रैवल हुआ एनालॉग, लेकिन पहुंचा अगेन डिजिटल. दैट मीन्स द मशीन sends the digital signal, but signal is converted into analog signal and move to the air, and when it reach at the destination point, at the destination point that analog signal is converted into digital signal, process it, but again it converted into analog, again it converted into
analog signal and then it again reach at the destination point, that is in the form of digital signal. So इससे क्या पता चलता है सर? इससे पता चलता है तो डाटा जनरेट होता है एक, मूव होता है एक, पहुंचता है एक, निकलता है एक, लेकिन अगेन जब हम डाटा देखते हैं, जो रिजल्ट देखते हैं, दैट इज इन द फॉर्म अनदर फॉर्म. सो देयर इज ए कन्वर्टर इज रिक्वायर्ड. सो देयर इज ए कन्वर्टर इज रिक्वायर्ड. ओके, जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज टू ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज के लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए, क्योंकि हम तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं समझते ना, तो हम एक ट्रांसलेटर चाहिए. वैसे ही मुझे एक डिवाइस चाहिए which convert the analog digital signal to analog and analog signal to digital. Analog signal to digital. So we require a device, and that device is called modem. So modem is one type of device. Modem is a one type of device that convert the signal digital to analog and analog to digital. Okay, so we require a device that convert the digital signal to analog and analog signal to digital. Now question is that student, now the question is that sir, ठीक है, तो डिवाइस इज देयर व्हिच कन्वर्ट द डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल. बट सर व्हाई दिस डिवाइस इज कॉल्ड मॉडेम? बिकॉज डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन. ओके, एंड एनालॉग टू डिजिटल इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन. Okay, so when the digital data is converted into analog data, that is called modulation. Modulation से MO. When the data is converted into analog to digital, that is called demodulation. तो demodulation से DM. तो in total this is called modem. In total this is called modem. Okay, तो मॉड्यूलेशन से डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन से डीमॉड्यूलेशन, दैट इज कॉल्ड modem. Okay, this is called your modem. Modulation, demodulation. Modulation and demodulation. Understand? ठीक है सर. तो this is a called modem. This is a device which convert the data from digital signal to analog signal and analog signal to digital signal. So जब भी हमें कोई एक इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए हमारे घर में, जब हम सिस्टम लाते हैं, ISP से कनेक्शन लाते हैं, तो वो एक डिवाइस आके कनेक्ट करता है. एक ब्लैक कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जो डिवाइस वो कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं मॉडेम, क्योंकि वो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करता है. ओके, लेकिन सर जब हम घर में रखते हैं तो एक बॉक्स यूज करते हैं, लेकिन जब सर हम मोबाइल में इंटरनेट करते हैं तब तो हमारे पास कोई डिवाइस नहीं होता. लेकिन मॉडेम तो कंपलसरी है, तो अभी कहाँ है मॉडेम? नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जब हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, बाइक में या ऑफिस में, जहां हमारा कनेक्शन नहीं होता, ओके, जहां वाईफाई नहीं होता, तब वहां भी हम सर क्या करते हैं, लैपटॉप ओपन करके कुछ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम नेट करके चले जाते हैं. ओके, मैं हॉटस्पॉट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि हॉटस्पॉट मतलब तो फिर इंटरनेट होगा तो ही, तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए तो अब हम क्या करते हैं, एक डिवाइस भी यूज करते हैं. दैट मीन्स इन डिफरेंट प्लेसेस, इन डिफरेंट सिचुएशन,
we require different types of modem. So from that there is a concept called types of modem. Okay, from this concept we are developing a new concept, that is types of modem. Okay, so this is called types of modem. Okay, so sir, how many types of modems are there? There are 3 types of modems are available. There are 3 types of modems are available. Number 1, external modem. Number 2, internal modem. Number 3, USB modem. Okay, there are 3 types of modems are there. One is your external modem, another is your internal modem, and next is your USB modem. तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. So what is external modem? So if you can write, you can also write external modem. वो भी मैं बोल रहा हूँ. The modem which is available externally or outside the system. The device or modem which is present externally or outside the system, that means that is visible to you, that is visible to the user, that is called external modem. So when we are taking a internet connection to our home, to our office, to our building, so we are using which type of modem? That is your external modem. Okay, offices, college, organizations using the external modem. Okay, so क्योंकि that is visible, that is present outside. Okay, so that is having some existence which is shown to you. So that's why it is called external. जैसे तुम्हारे फैकल्टी पढ़ाते हैं, कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं, नॉट विजिबल टू अदर्स, दैट इज इंटरनल लेक्चर, इंटरनल टीचर्स. जब बाहर से आते हैं भाइवा लेने के लिए तुम्हारे एग्जाम में, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर से आते हैं. सो बाहर से हम जो डिवाइस कनेक्ट करते हैं, दैट इज आवर एक्सटर्नल मॉडेम. ओके, तो ठीक है सर, एक्सटर्नल मॉडेम तो है, तो दैट इज वेरी यूजफुल, दैट इज वेरी कंफर्टेबल, रिलायबल. ठीक है, लेकिन सर ओके, सबने तो लिख लिया एक्सटर्नल मॉडेम, ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है एक्सटर्नल मॉडेम, बट इसका कुछ वर्ड डेफिनेशन नहीं है. ऐसा कुछ नहीं कि 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा. अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, व्हाट यू मीन बाय एक्सटर्नल मॉडेम? द मॉडेम व्हिच इज विजिबल टू अस, द मॉडेम व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मॉडेम. ओके, next is your internal modem.
ऑब्वियसली इंटरनल मतलब इनसाइड the modem which is present inside the CPU, the modem which is present inside the system, the modem is which is not visible to you, that is called internal modem. जो मॉडेम हमें विजिबल नहीं है, जो मॉडेम हम देख नहीं सकते, लेकिन मॉडेम है मॉडेम। अगर मॉडेम नहीं होता तो conversion of data is not possible. If conversion of data is not possible, internet is not possible. So internal modem is required. Okay, modem is required. So that is present internal inside the CPU. तो बोले सर एग्जाम्पल ना, मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन में जो 4G सपोर्ट करता है, 3G सपोर्ट करता है, 5G सपोर्ट करता है, तो उसके लिए मुझे मेरे पास एक डिवाइस है जो कि हमें पता नहीं, लेकिन जिसने फोन कंपनी ने जिसने जो डेवलप किया उसने वो उसे क्या किया है, फिट कर दिया, उसने किया है उसे इंसर्ट कर दिया है। ओके, दैट इज आवर इंटरनल मॉडेम। ओके, दैट इज आवर इंटरनल मॉडेम। वो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन प्रेजेंट है, काम करता है, इनविजिबल है लेकिन काम करता है, दैट इज आवर इंटरनल मॉडेम। सो ठीक है सर, तो दो टाइप के तो मॉडेम हो गए, लेकिन मॉडेम को इनबिल्ट करना पड़ता है इंटरनल मॉडेम को कनेक्ट करना पड़ता है एक्सटर्नल मॉडेम। लेकिन सर वो एक्सटर्नल मॉडेम में तो हर वक्त अपने हाथ में लेकर घूम नहीं सकता, और मेरे जितने भी डिवाइस है सब में तो मैं फिट नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि मोबाइल फोन ये सब में फिट करेंगे मॉडेम, तो दैट इज रिक्वायर है स्पेस। ओके, तो डेस्कटॉप में, लैपटॉप में हम तो इंटरनल मॉडेम तो ऐसे फिट नहीं कर देते। ओके, तो रिक्वायर है मॉडेम ऑल्सो आउटसाइड। सो फॉर ट्रैवलिंग पर्पज, फॉर जर्नी पर्पज वी रिक्वायर ए USB मॉडेम। USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, एक यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, एक यूनिवर्सल डिवाइस होता है दैट इज कनेक्टेड टू योर USB पोर्ट, जिसे तुम लोग बोलते हो स्टूडेंट्स डोंगल और डाटा कार्ड। जनरली इट इज कॉल्ड डाटा कार्ड, बट वी आर द ह्यूमन बीइंग, वी आर द यूजर, हमारा ट्रेंड हो गया है, हम उसे डोंगल भी बोलते हैं। ओके, तो 4 ईयर 5 ईयर बैक जब हमारा जो स्मार्टफोन इतना यूज नहीं होता था, 4G नहीं था, तो हम जब लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जब भी हमारा मन हो हम इंटरनेट करना है, कहीं भी हमें इंटरनेट करना है, तो हम हाथ में एक मॉडेम लेते थे, जो बिगटेल का, टाटा इंडिकॉम का, उसे टाटा फूटन बोलते थे, टाटा फूटन, बिगटेल, माइक्रोमैक्स बहुत पॉपुलर था। तो तुम्हारे जो पेन ड्राइव की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है डिवाइस, इस तरह। ओके, लाइक दैट। तो इट इज कनेक्टेड टू योर USB पोर्ट एंड इट वर्क एज ए मॉडेम। ISP सर ना, लाइक ए मोबाइल फोन, उसके अंदर ही एक ISP होता था, लाइक ए मोबाइल फोन, उसके अंदर ही एक सिम कार्ड होता था। ओके, उस सिम कार्ड से हम ISP लाते थे एंड इट इज वर्क एज ए मॉडेम, बट इट इज कॉल्ड योर USB मॉडेम। इट इज कॉल्ड योर USB मॉडेम। ओके, सर इससे फायदा क्या हुआ? नहीं, जस्ट तुम्हारे पॉकेट में है, बस चलते रहो, आज ट्रेन में मर्जी हुआ इंटरनेट तो कनेक्ट करो सिस्टम के साथ, कनेक्ट हो जाएगा, देन स्टार्ट हो गया। तो अभी भी मॉडेम यूज होता है, अभी भी मॉडेम यूज होता है, लेकिन ज्यादातर सब आजकल जियो का ही मॉडेम यूज करते हैं। डोंगल भी है, अभी भी बोलते हैं डोंगल या मॉडेम, USB मॉडेम, दैट इज कॉल्ड जियो USB मॉडेम। ऐसे ब्लैक कलर का एक शेप होता है, लेकिन उसे कनेक्ट करने के लिए हम एक केबल यूज करते हैं। लेकिन पहले जो यूज होता था वो तुम्हारा पेन ड्राइव की तरह ही होता था, जस्ट कनेक्टेड। अभी एक डाटा केबल चाहिए, डाटा केबल वही USB केबल, कनेक्ट टू द सिस्टम एंड स्टार्ट इंटरनेट। क्योंकि तुम्हारा जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लाते हो वो कभी आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, कभी फेलियर हो जाता है, कभी हम रिचार्ज नहीं करते, वो भी एक पर्टिकुलर प्लेस में होता है। ओके, लेकिन तुम अभी 2 किलोमीटर दूर गए हो, वहां तुम्हें इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप है, जस्ट निकालो USB मॉडेम, कनेक्टेड एंड स्टार्ट योर वर्क। ओके, तो दैट इज कॉल्ड योर USB मॉडेम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडेम्स आर देयर। लेकिन सर व्हेन वी इंस्टॉल एंड यूज ए मॉडेम, तो दैट विल बी इंस्टॉल, यस। तो देयर इज ए
जब तुम मॉडेम लाओगे, डिवाइस यूएसबी हो या एक्सटर्नल मॉडेम हो, तो उसका एक आइकॉन आता है ऐसे। मैं माइक्रोमैक्स का बोल रहा हूँ, माइक्रोमैक्स, क्योंकि मैं माइक्रोमैक्स यूज करता था। ओके, तो माइक्रोमैक्स का जो मॉडेम है वो हमने यूज किया, माइक्रोमैक्स का। ओके, तो माइक्रोमैक्स ऐसे आइकॉन आता है, उसके ऊपर तुम डबल क्लिक करोगे, तो इस तरह का एक बॉक्स आएगा, उसमें लिखा होगा कनेक्ट। देन यू क्लिक ऑन द कनेक्ट, यूजर आईडी, पासवर्ड अगर तुमने दिया है। अगर यू आर द सिंगल यूजर, तुम एक ही यूजर हो तो और कोई यूज नहीं करता, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। Otherwise you give the user ID and password and connect तो है, connect click करो, click on the connect and it is connected and start your internet. Okay, so this is all about our modem. तो इतना conclusion हुआ कि without modem we does not do the internet. Without ISP we do not use the internet. Without browser we don't use the internet. तो जैसे एक सिस्टम होता है, ऑल आर लिंक्ड टू ईच अदर, लाइक दैट योर पार्ट्स ऑफ इंटरनेट आर लिंक्ड टू ईच अदर। इफ वन पार्ट इज मिसिंग यू कैंट यूज द इंटरनेट। ओके, तो बहुत सारे हमारे एक कैटेगरी भी होते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेट का, जो कि डाटा पैक के हिसाब से आता है। ओके, जैसे तुम फोन रिचार्ज करते हो तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 GB, 2 GB, 3G प्लान होता है, वैसे ही हमारा इंटरनेट का भी प्लान होता है। तो जो पॉपुलर प्लान है दैट इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड। ये मत सोचो कि ब्रॉडबैंड इज ओनली प्रोवाइडेड बाय BSNL, नो, एवरी कंपनी व्हिच प्रोवाइड द ISP दैट हैविंग द फैसिलिटी ऑफ ब्रॉडबैंड। तो थोड़ा सा ज्यादा स्पीड, प्रोसेसिंग, डाटा वो ज्यादा अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड। ब्रॉड मतलब ज्यादा, ओके, ब्रॉड मतलब ज्यादा, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हो ना, ब्रॉडबैंड तो ज्यादा, बैंड मतलब बैंडविड्थ, स्पीड। तो एक और बात मैं बोलना भूल गया स्टूडेंट, स्पीड ऑफ इंटरनेट। ओके, तो जब हम रेगुलर क्लास डिस्कशन कर रहे थे उसमें मैंने बोला था, ओके, द स्पीड ऑफ इंटरनेट इज ऑल्सो मैंडेटरी, बिकॉज जब हम इंटरनेट यूज करते हैं, अभी जब मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं, मैं अपने नए मोबाइल में, उसमें फैसिलिटी है कि वो शो कर देता है करेक्टली मैंने कितने डाटा आज के दिन में यूज किया, कितना डाटा, ओके, जो डाटा मेमोरी, कितना डाटा जो मैंने आज यूज किया करेंट डे में, एंड ऑल्सो गिव द ऑल्सो शो द स्पीड ऑफ, मतलब 3 kbps, 48 kbps मतलब पर सेकेंड, किलोबाइट्स पर सेकेंड, MBPS और थोड़ा सा ज्यादा 1 MBPS, मेगाबाइट पर सेकेंड। तो दिस इज द स्पीड ऑफ द इंटरनेट, मतलब इन व्हिच स्पीड डाटा इज रिसीविंग, इन व्हिच स्पीड डाटा इज ट्रांसमिटिंग, जो कितने स्पीड में डाटा ट्रांसमिट होता है, कितने स्पीड में डाटा रिसीव होता है। But student, the speed is always up and down. That's why the internet connection is also up and down. जब हम ऑनलाइन क्लास करते हैं स्टूडेंट, तो तुम्हें पता होता है कि कभी कभी हमारा क्वालिटी पूरा ठीक रहता है, हमें पूरा सुनाई देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा सर्वर डाउन हो जाता है। ओके, थोड़ा सा सर्वर डाउन हो जाता है, उसके हिसाब से क्या होता है सर ना, हमारा जो नेटवर्क कनेक्टिविटी पूर हो जाता है, पूर नेटवर्क कनेक्टिविटी हो जाता है। पूर नेटवर्क कनेक्टिविटी मीन्स डाटा स्पीड इज रेड्यूस। तो जितने स्पीड से डाटा जाता था उतने स्पीड से डाटा आ नहीं पा रहा है, और जितने स्पीड से डाटा जा भी रहा था अभी स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया? लाइक योर ट्रैफिक, जैसे हमारा ट्रैफिक जाम होता है वैसे भी सर्वर भी जाम होता है, वहां भी डाटा ट्रैवल करते हैं, लेकिन सर्वर टावर तो एक ही है ना। तो अगर ज्यादा हो गया एक ही टाइम में, एट ए टाइम अगर बहुत ज्यादा होगा तो हमारा भी डाटा स्पीड कम हो जाता है। तो हमारा नेट प्लान के हिसाब से वो डिपेंड करता है हमारा डाटा पैक क्या है, हमारा डाटा स्पीड क्या है। ओके, ज्यादातर एयरटेल जियो इसका डाटा स्पीड बहुत अच्छा रहता है, तो बहुत स्पीड से डाटा ट्रेवल करता है और स्पीड से डाटा रिसीव होता है, इसीलिए
नेटवर्क पूर्ण नहीं रहता और हम फ्रीक्वेंटली वीडियो ऑडियो सब देख सकते हैं। लेकिन जब डाटा स्लो हो जाता है या डाटा पैक, तुम मालूम होगा डाटा पैक जब खत्म हो जाता है वो ऑटोमेटिकली डाटा स्पीड नेटवर्क को 4G से 3G कर देता है, मतलब जो डाटा ट्रैवलिंग का स्पीड है वो कम कर देता है। और जब डाटा ट्रैवलिंग स्पीड कम हो जाता है ऑटोमेटिकली हमारा नेट स्लो हो जाता है। जैसे कि तुम बाइक में जा रहे हो, तुम्हारा स्पीडोमीटर 100 किलोमीटर दिखा रहा है तो यू रीच ए प्लेस 10 मिनट, जब वही 40 हो जाएगा। क्यों 40 हो गया? सर रोड जाम है, रोड ठीक नहीं है, ओके, वेदर ठीक नहीं है। दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन योर डाटा ना, वो हमारे डाटा में भी एप्लीकेबल है। ओके, सो स्पीड कम हो जाए तो हम लेट में पहुंचते हैं, लेट में पहुंचते तो लेट आते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा स्पीड स्लो हो जाता है, लाइक आवर डाटा। ओके, सो इस सब टर्म के लिए हमारे पास एक और टर्म है, दैट इज कॉल्ड सेशन। मीन्स ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज फिक्स्ड फॉर ट्रैवलिंग द डाटा इन एयर। जो सिग्नल डाटा ट्रांसमिट करता है दैट इज ए टाइम पीरियड इज फिक्स्ड एंड दैट इज कॉल्ड योर सेशन, दैट इज कॉल्ड योर सेशन। If the session or time period will be expired within that time period, your data is not coming, तो your connection is disconnected. ओके, कभी कभी हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं ना टाइप करके, तो सेशन विल बी एक्सपायर, ट्राई अगेन, मतलब क्या, जितना टाइम उसने क्रिएट किया था उस टाइम में वो डाटा हमारा पहुंच नहीं पाया ड्यू टू पुअर नेटवर्क, इसलिए नेटवर्क फेल हो गया। जैसे कि एग्जाम के लिए हमें जाना है, 1 घंटे में पहुंचना है, अगर हमारा बाइक स्लो हो गया, हम 2 घंटे में पहुंचे तो हमें एग्जाम में अलाउ नहीं करती, योर टाइम विल बी एक्सपायर, योर सेशन विल बी एक्सपायर, लाइक दैट डाटा। Okay student, this is all about your modem signal data speed. In the next video we will be discussing about the merits and demerits of internet. It is useful we are using internet or not, can we survive without internet or not, this will be discussed in our next video. Okay, till then goodbye and thank you for watching video and wait for our next video. Okay, goodbye.